everyone, welcome back to my channel. If you're new here, don't forget to hit that subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Today I'm sharing my ultimate pamper routine to help you unwind and treat yourself after a long week. Let's get started. The first step in my pamper routine is all about setting the mood. I absolutely love creating a calming atmosphere to help me unwind. Next, I move on to taking care of my hair. I start by gently combing through my hair using a wooden comb. Wooden combs are great because they help reduce static and breakage, plus they are much gentler on the scalp. This step not only detangles my hair but also gives a moment to relax as I slowly work through any knots. Next, let's move on to hair care, जो मेरी पैम्परिंग रूटीन का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आज मैं ट्राई कर रही हूँ लॉरियल हाइलुरॉन मॉइस्चर शैम्पू। मुझे ये स्मॉल सेशे कुछ और प्रोडक्ट्स के साथ फ्री मिले थे, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू गिव इट अ शॉट। ये शैम्पू बहुत हाइड्रेटिंग है क्योंकि इसमें हाइलुरॉनिक एसिड है जो मेरे हेयर को एक बिजी वीक के बाद बहुत ज़रूरी है। शैम्पू अप्लाई करने से पहले मैं हमेशा उसे थोड़े पानी में डाइल्यूट करती हूँ। दिस इज अ ट्रिक आई स्वेयर बाय। Diluting the shampoo helps it distribute more evenly through my hair and scalp, ensuring a thorough cleanse without being too harsh. प्लस ये मेरे हेयर को ओवरली स्ट्रिप्ड होने से भी बचाता है, कीपिंग इट सॉफ्ट एंड हेल्दी। मैं जेंटली डाइल्यूटेड शैम्पू अपने स्कैल्प में मसाज करती हूँ, फोकसिंग ऑन द रूट्स जहाँ ऑयल ज्यादा बिल्डअप होता है। Once my hair is thoroughly cleansed, I move on to conditioning with Bee Blend Intense Moisture Conditioner. ये कंडीशनर मेरे लिए गो टू है जब मेरे हेयर्स को सीरियस मॉइस्चर बूस्ट की जरूरत होती है। मैं इसे जनरसली मिड लेंथ से एंड लेंथ तक अप्लाई करती हूँ जो यूजुअली ड्राइस्ट एरिया होते हैं। मैं इस स्टेप में टाइम लेती हूँ, मेकिंग श्योर एवरी स्ट्रैंड इज कोटेड। यूजुअली मैं इसे कुछ मिनट्स के लिए ऐसे ही लगा के रख देती हूँ और कुछ मिनटों के बाद इसे रिंस ऑफ कर देती हूँ। आफ्टर रिंसिंग इट आउट, मेरे हेयर्स इनक्रेडिबली सॉफ्ट, स्मूथ और मैनेजेबल फील होते हैं। It's like giving my hair a big drink of water, leaving it hydrated and ready to take on week ahead. Next, let's start with shower routine. मैं यूज कर रही हूँ मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट शावर जेल प्लम बॉडी लव-इन हवाई अरोमा, जो कि अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, बट आई जस्ट कांट गेट इनफ ऑफ इट। इसकी फ्रेग्रेंस मुझे इतनी पसंद है, इट्स लाइक बीइंग इंस्टेंटली ट्रांसपोर्टेड टू अ ट्रॉपिकल बीच। The scent is so refreshing and uplifting, perfect for washing away all the stress of the day. Even though it's almost finished, I'm definitely going to repurchase it because it's become such an essential part of my pamper routine. अगर आपको भी tropical fragrances पसंद हैं, then I highly recommend giving this one a try. I love how it leaves a subtle, long-lasting fragrance on my skin, which keeps me feeling fresh throughout the day. Next, I'm using my DIY body scrub, which is one of my favorite parts of my pamper routine. ये स्क्रब मैं घर पे ही बनाती हूँ using just a few simple ingredients: brown sugar, oats, honey and coconut oil. The best part about this scrub is that it's all natural, gentle on the skin and super effective. Brown sugar works as a natural exfoliant जो gently remove करता है dead skin cells को, leaving my skin feeling super smooth and refreshed. Oats add an extra layer of gentleness, making this scrub perfect even for sensitive skin. They help soothe and calm the skin, which is a huge plus. मैं इस स्क्रब को gently circular motion में अप्लाई करती हूँ, focusing on areas like elbow, knees and feet, जहाँ skin थोड़ा rough होता है. After rinsing, my skin feels like it's just had a spa treatment, super soft, smooth and glowing. और सबसे अच्छी बात ये है कि ये स्क्रब बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, मेकिंग इट अ परफेक्ट एडिशन टू एनी पैम्परिंग रूटीन विदाउट ब्रेकिंग द बैंक। नेक्स्ट, आई लव टू रिमूव बॉडी हेयर एज अ पार्ट ऑफ माई पैम्पर रूटीन। इसके लिए मैं यूज करती हूँ जिलेट शेविंग क्रीम एंड जिलेट रेजर। Shaving is such a quick and easy way to get smooth skin, and with the right products, it becomes a really enjoyable part of the routine. फर्स्ट आई अप्लाई द जिलेट शेविंग क्रीम जो क्रिएट करता है एक नाइस थिक लादर। ये रेजर को स्मूथली ग्लाइड करने में मदद करता है, रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ एनी कट्स और इरिटेशन। मैं इसको इवनली अप्लाई करती हूँ ओवर द एरियाज आई एम गोइंग टू शेव, ensuring that my skin is well prepped and protected. Shaving with this combination leaves my skin feeling incredibly smooth and soft. I always make sure to take my time with this step क्योंकि gentle और careful रहना ज़रूरी है to avoid any cuts. Plus ये एक और तरीका है to really pamper myself and feel refreshed. Shaving के बाद my skin feels silky smooth and I'm ready to take on the day with confidence. Next up is my skincare routine.
जिसमें सबसे पहले मैं यूज करने वाली हूँ सेटाफिल जेंटल फेस वॉश। ये फेस वॉश एब्सोल्युटली अमेजिंग है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कीपिंग माय स्किन क्लीन एंड सॉफ्ट विदाउट एनी हार्शनेस। आफ्टर rinsing it off with lukewarm water, my skin feels clean, soft and ready for the next steps in my pamper routine. Next, it's time for a face mask, and for that I'm using the Plum Green Tea Clear Face Mask. ये क्लियर मास्क मेरी pamper routine का एक essential part है. It's a perfect for detoxifying the skin and drawing out impurities. I let this mask sit for about 15 to 20 minutes ताकि ये अपना मैजिक कर सके। जब तक ये मास्क अपना काम कर रहा होता है, मैं अपने बॉडी केयर रूटीन को कंप्लीट करती हूँ। For body moisturizing, I am using the Plum Body Lovin' Hawaii Aroma Body Lotion. ये लोशन भी मेरी रूटीन का एक फेवरेट पार्ट है। इसकी ट्रॉपिकल फ्रेग्रेंस मेरे सेंसेस को इंस्टेंटली अपलिफ्ट कर देती है and it leaves my skin feeling super soft and hydrated. Now it's time to rinse off the face pack. Now that my skin is feeling fresh and clean after rinsing off the face mask, it's time to move on to the next step, applying a face serum. For this, I'm using a hyaluronic acid serum, which is a must-have in my skincare routine. This step is essential क्योंकि ये skin को deeply moisturize करता है, ensuring it stays hydrated and balanced. Next, I move on to applying my under eye serum. For this, I'm using the L'Oreal Revitalift Hyaluronic Acid Eye Serum. This serum is specially formulated for delicate skin around the eyes. For the moisturizer, I am using the Dot & Key Barrier Repair Cream. This cream is perfect for locking in all the hydration and providing a protective barrier for my skin. This step not only helps to keep my skin hydrated but also creates a smooth base for any makeup I might apply later. For lip care, I am using Hyphen Lip Balm. The lip balm is perfect for keeping my lips soft and hydrated throughout the day. The Hyphen Lip Balm has a smooth, creamy texture that glides on effortlessly, providing the long-lasting moisture and sun protection. Finally, the most important step in my pamper routine is applying sunscreen. Sunscreen is crucial for protecting my skin from harmful UV rays and preventing premature aging. Even on cloudy days or when staying indoors, sunscreen is must to safeguard my skin against UV exposure. It's a vital step that completes my skincare routine. Now let's move on to hair care and hairstyling. I love giving my hair the same level of attention and care that I give my skin. Once my hair is free, I apply a nourishing hair serum to add moisture and shine. The serum helps to smooth out any frizz and makes my hair more manageable. I focus on the ends of my hair where it tends to get dry and damaged. Next, I use a heat protecting spray to shield my hair from the heat of styling tools. ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रिवेंट हीट डैमेज एंड कीप माई हेयर हेल्दी. आई अप्लाई इट इवनली थ्रू आउट माई हेयर, मेकिंग श्योर एवरी स्ट्रैंड इज कोटेड. Now it's time for styling. I use my blow drying brush to give my hair volume and smoothness. The blow drying brush helps to style my hair effectively, giving it a polished look without too much effort. I work in sections, ensuring that each part of my hair gets the attention it needs for the perfect finish. By the end of this process, my hair looks and feels fantastic, well moisturized, protected and styled to perfection. Now to finish off this look, I am adding some jewelry to make it more attractive and complete. I love how the right accessory can elevate an outfit and give it that extra touch of elegance. I take a moment to admire the final result, from the perfectly pampered skin and styled hair to added sparkle of jewelry. I feel ready to take on the day with confidence and style. Thank you so much for joining me in this pamper routine journey. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. I will see you in the next